Good morning, everyone. So, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. आज हम MCQ सीरीज 3 लेके आए हैं फॉर आर NTA UGC NET JRF होम साइंस जून 2021 के लिए. सो दीज MCQs आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर DSSB, TGT, PGT, UPPSC, GIC, स्विंग, फैशन, ड्रेस मेकिंग, ड्रेस टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, होम साइंस एज वेल एज फॉर क्लास 11th एंड 12th. सो ऑलरेडी जो MCQs की आपको प्ले लिस्ट हमें मिल जाएगी, उस प्ले लिस्ट में जाके आप सारे के सारे MCQs देख पाएंगे. Get it? नेक्स्ट ऑलरेडी हमारा जो इंटीरियर दैट इज आर यूनिट 6 इसकी जो है उसकी प्रिपरेशन की क्लासेस ऑलरेडी 16th of January 2021 से स्टार्ट हो चुकी है. यू कैन ऑल्सो टेक नोट्स अलॉन्ग विद योर क्लासेस. और ऑलरेडी हमारी जो टेक्सटाइल्स है यूनिट 3rd एज वेल एज हमारा जो अपेरल है वो हमारा डिज़ाइनिंग है वो हमारा यूनिट 4 वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. इफ़ यू वांट दोज वीडियोस एज वेल एज द नोट्स ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद फॉर द फर्दर डिटेल्स. एंड इंडिविजुअल यूनिट्स के नोट्स भी आपको यहाँ पर इन इंग्लिश प्रोवाइड हो जाएंगे विद रिकॉर्डेड क्लासेस. एंड फैब से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चाइल्ड डेवलपमेंट का. सो उसको भी आप परस्यू कर सकते हैं. Now, first question for today is question number 31. Read the statement and following question carefully and choose appropriate code. So these are my assertion reason type questions. So in question number 1, in pattern making, silhouette is important as it tells about the fullness required in the garment. So firstly, we need to know what is silhouette. Silhouettes आपका क्या होता है? आउटलाइन होती है. क्या होती है? आउटलाइन होती है गारमेंट की. सो सिल्हूएट इज बेसिकली द आउटलाइन ऑफ अ गारमेंट. सो बाय दैट आई कैन नो दैट हाउ मच fullness or how much flare I can say I need for my particular garment itself. So just yes tell me or you can tell by yourself also and you can match the answers कि कितने आपने सही दिए. It will be really helpful for you guys. So assertion is are true that yes silhouettes can is important as it can also tell us the fullness required in the garment itself. Now if I talk about the silhouette, so silhouette मैंने आपको बताया is the outline of the garment. So straight silhouette means this is my straight silhouette and this is my bell shaped silhouette. Okay, so yes tell me which of the one need more fabric. किसको ज़्यादा fabric की need होगी? So इसको या इसको? Definitely this one. So they are talking about that whether our straight silhouette needs more fabric. So no, that's not possible. That means our basic reason or the reason for this particular assertion is false. Correct? So answer is our assertion is correct but our reason is false or our B is incorrect. Next question number 32. This is also assertion reason kind of question. So you can do more and more questions like this and can assess you more accurately. So assertion is this particular is our dabu is a kind of printed textiles. So firstly I need to know that because in my whenever you find any of a definition in your assertion means in my assertion we do contain a word dabu. So I need to know or I have to think about what is basically dabu. So it is a printed textile. First thing is it is a printed textiles. Now I need to see that what kind of printed. It is block printed textiles. Now where what are the reasons? So I need know that it is basically from Rajasthan itself. Or if I talk about other states as well as, then I will go for Gujarat as well as MP, Madhya Pradesh. Correct? So dabu is a kind of printed textiles. Yes, for sure it is a printed textile. As well as is it practices primarily in Andhra Pradesh? So we already talk about it is primarily be practices in Rajasthan itself. So assertion for this particular is my correct but the reason behind is my incorrect. समझ आ गया?
Next, 33 question is read the statement. This one is also my assertion reason kind of question. So garment components, just listen this particular question very carefully because it may contain many specific or basic information. Garment components are the basic section of the garment. कि garment के जो components होते हैं वो कौन सा basic section हमारे garment का मतलब कौन सा वाला होता है, क्या वो basic section होता है components का. So basically here also you are state with the term garment components. What is the meaning of garment components here itself? If we don't know that, then we can't give the answer to this particular question. So we can say garment components are those parts of the garment that are required one or more separate piece to be assembled as a unit. So one or two means how many types? We can say front, we can say back, we can say sleeves, we can say bottom. Bottom maybe we can say front and as well as back. We can say our buttons. Okay, we can say collar. Yes, name more. Neckline, your plackets. So these are certain types of garment components. So if you just see, are these the basic section of the garment? Yes, appropriately. These all are my basic section of the garments itself. So this particular my assertion is correct for, means true for this particular reason. Now get to the reason that they cannot be assembled simultaneously by different sewing machine. What they are saying, they are not. Just make yourself so sure about the question that NTA will make you little bit confused by applying not or no in your particular question. वो आपको no दे देता है या note दे देता है. You just need to focus this particular word. So what they are saying that they cannot be, क्या हम उनको different sewing machine के through assemble नहीं कर सकते? Okay, firstly we will just judge that for stitching particular garment we need our sewing machine. एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए होती है, अपनी स्विंग मशीन ही चाहिए होती है. एंड ऑल्सो बाय व्हाट वेज इफ आई टॉक अबाउट, सो बाय डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिचेस, बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सीम्स, बाय डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग. Okay, what I can do my or I can make a proper garment I by all these kind of components. करेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विंग मशीन से हम बना सकते हैं. सो इसलिए हमारा जो assertion है दैट इज माई करेक्ट, बट माई बी इज इनकरेक्ट. रीजन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट बिकॉज आई कैन असेंबल, हम असेंबल कर सकते हैं. Next question is assertion says that chikankari, we are talking about chikankari is my embroidery. Get it? It is basically from Lucknow, Uttar Pradesh. So these are certain things which quickly comes in my mind whenever I got to see some of the kind of questions. So just kept your basic concepts too much clear so that you can't be unsure about anything. So chikankari is worked on thin and sheer fabric. So what is my firstly the fabrics of chikankari? You can also see the video I already uploaded for my embroideries, different kind of embroideries all over the India. आप उनको देख सकते हैं and you can make short notes for the same also. Okay, so chikankari किस पे होगी? हमारी कॉटन के ऊपर. और किस पे होगी? हमारे sheer fabrics कौन से होते हैं? The thin fabrics one like my chiffon, my georgette. Okay, so for basically this question my assertion is true. And if I talk about the jali work, it comprises a variety of jali work, then yes, it is also true because my chikankari is a mixture of jali work. So both assertion and reasons are correct in this particular question. Next question, read the statement in following questions, same assertion reason. We are talking about felt. So felt, what is felt? Felt is, firstly I talk about the felt particularly, it is made with wool. Okay, it is made with wool fibers, I know that, yes. And what it is are made by interlocking of scales.
we are talking. So yes, they are made with interlocking of scales, and scales present on wool interlock on application of heat and agitation. So yes, what it is, if I talk about that, felt is created when wool fibers are agitated in water, they slip over one another and the scales interlock, preventing the fiber from returning to the original shape. Means if I interlock my fibers, okay, if I do interlock my fibers, what it cause, it won't get in the previous structure or original shape. So yes, by applying heat and agitation, the scales present on wool interlock. करेक्ट. सो दोनों भी हमारे क्या होंगे, करेक्ट रहेंगे. नेक्स्ट assertion reason depicts that rib plain twill satin is they all are basic. सबसे पहले मेरी basic weaves कौन सी होती हैं? Yes, write it down. My plain weave, my twill weave, as well as my satin weave. Correct. And these are my basic weaves. Now if I talk about the rib, I know that my plain do contain two. One is my rib, other is, yes, name it, basket. Correct. So yes, these three are my basic weaves, or these four are my basic weave. That means it's true. And in all these weaves, 3 sets of yarn. Yes, tell me, in my weaving process, how many sets of yarn I do need? बताइए. एक आपका warp होता है and one is my weft. So they are talking about 3 sets of yarn. Is it true or false? So automatically my answer depicts that my assertion is correct, but my reason is totally wrong. Clear? Next question is assertion reason. The double row stitching on jeans is also known as French seam. So firstly you need to learn about the French seam. You can see the videos we already uploaded about different kind of seams itself. So basically for my French seam, if I talk about, what is my French seam? It is a seam enclosed on the inside of the sewn items, है ना, so that no raw edge visible. हम क्यों लगाते हैं? हम इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी रॉ एज हमारा विजिबल ना हो. दे आर टॉकिंग अबाउट जीन्स, दे आर टॉकिंग अबाउट डेनिम. तो क्या डेनिम के ऊपर हम डबल जो सीम रो होती है, अब यहाँ पर पता होना चाहिए डबल रो स्टिचिंग क्या होती है. सो जो डबल स्टिचिंग सीम होती है वो हमारी प्लेन सीम की तरह ही होती है, और इसमें जो हमारी 2 स्टिचेस लगती हैं, सो दैट दिस इज डबल स्टिच. सो एक हमारी नॉर्मल स्टिच, एक और किस लिए यूज की जाती है? टू स्ट्रेंथन. So that particular is not my French seam, है ना, because French seam is different. It is used for enclosing my raw edges as well as it is needed for strength also. But double row stitch सिर्फ हमारी strength के लिए use की जाती है. And French seam are often used on lightweight fabrics. So इन्होंने क्या बात बोली है कि जो हमारी French seam है वो हम light weight fabric के ऊपर use करते हैं. सो यस, assertion हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज ये जो फ्रेंच सीम हमारी डबल रो स्टिचेस से कोई मतलब नहीं है इसको. और जो assertion हमारा जो रीज़न है दैट इज़ करेक्ट, बिकॉज फ्रेंच सीम हमारी जो भी रॉ एजेस होते हैं उनको उनको मेक इट इनविजिबल, उनको इनविजिबल करने के लिए यूज़ की जाती है. सो इट इज़ बेसिकली डन ऑन माई लाइट वेट फैब्रिक. Next assertion is my Fulkari is the traditional folk art of Punjab. So yes, we are headed to our embroidery section now again. So embroidery में अगर फुलकारी कहाँ की है? Yes, it is from Punjab itself. So my assertion is correct. It is true. It is done by women in the leisure. Leisure means free. Means free time to give their daughter and granddaughter marriage. Means when daughter or granddaughter do marriage, then they are gifted with a fulkari. Is that true? Yes, exactly, it is also true. So my assertion and reason both are correct in this perspective also. Next question is a very interesting question and a very simple question. Correct.
state the correct order of making a plain seam. Now इन्होंने क्या बोला कि plain seam आपको बनानी है. How? They are giving us the 4 options. So keep the 2 fabrics with right side facing each other. Don't get confused. Don't get that how this could be make. आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के questions आते हैं, just make different kind of assumptions. अपने आप को एक रफ आपको पेपर मिलता है तो उसके ऊपर आप सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए एंड देन अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जस्ट मैच इट विद द ऑप्शंस गिवन. फिर आप ऑप्शन से मैच कीजिए, यू फाइंड द करेक्ट आंसर एज वेल एज. सो हियर द करेक्ट आंसर इज दैट इज फर्स्टली आई नीड टू ड्रॉ अ सीम लाइन. जस्ट kept in mind, they are not saying that make a seam line, they are saying that draw a seam line. So हमने एक seam line लगा दी जिसमें हमने दोनों pieces को that have to join. Okay, means this work we need to do. Then what I need to do, keep the 2 fabric with right side facing each other. दोनों के right side को एक साथ रख के उसको रखना है. Then I need to pin it up and then I need to stitch it up. Okay. A means of eliminating bulk in corner. So bulk in corner means whenever I need to stitch on my corner, so this is the bulk. Whenever I need to stitch in a corner, so this is the bulk. So how I have to eliminate, how I need to eliminate it. Eliminate it means कम कर देना इसको, है ना, कम कर देना. कैसे करेंगे हम कम इसको, बताइए. मीटरिंग, एज स्टिचिंग, नॉचिंग एंड फेसिंग. कौन सा ऑप्शन हमें यूज करना पड़ेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज माय मीटरिंग. नाउ व्हाट डज द मीटरिंग मीन्स हियर. सो मीटरिंग बेसिकली हमारा क्या चीज होती है, जिसके अंदर हम एजेस को, जो हमारी एजेस हैं इनको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं ताकि कॉर्नर पे से बल्क रिड्यूस हो सके. दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज मीटरिंग इटसेल्फ. क्लियर. सो ये एक क्या है, इट इज अ नीट वे. ये एक नीट वे है फिनिश करने का कॉर्नर्स का, सो दैट एज इन सच अ वे दैट देयर इज अ बल्क इन द कॉर्नर विच द फैब्रिक इज टर्न्ड अंडर द फिनिशिंग द एजेस. सो एजेस के अंदर से हम क्या करते हैं, जब वेन एवर वी गिव फिनिशेस टू माई एजेस आई नीड टू एलिमिनेट द बल्क इटसेल्फ. Yes, next question number 41 is a method in which fabric is used for developing a garment pattern. Yes, tell me which now just remember they are talking about garment pattern. They are not talking about pattern making. They are not talking about pattern making. If I said pattern making, it is 2D. If I am saying garment pattern, then they are saying the 3D pattern, and I know 3D is particularly my what process, my ड्रेपिंग प्रोसेस. ड्रेपिंग में क्या होता है, हम फैब्रिक से जनरेट करते हैं, ड्रेस फॉर्म पे जनरेट करते हैं. वी कैन ऑल्सो से टेस्ट फिट बनाते हैं. गेट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज काला बटन इज अ काइंड ऑफ. सो काला बटन क्या चीज है हमारी. Yes, tell me what it is. It is basically we can say a zari work, okay, or kamdani work, or we can say what, zardozi work. So it is basically done with my gold and silver thread itself. Motifs of which embroidery are inspired from architectural design, temples and structures. So if I talk about this particular, so हमें पता होना चाहिए फुलकारी, कांथा, कसूती एंड और चिकनकारी के अंदर कौन से हमारे जो हैं मोटिव्स यूज किए जाते हैं, मोटिव्स इंस्पायर्ड होते हैं. सो फॉर पर्टिकुलर माय कसूती, geometrical ones inspired by structure of temples are used. Raising or lowering of warp yarn. So raising, and what they are talking about, they are basically talking about weaving. You can see the weaving video and that video do contain all these steps, my shedding, beating एंड पिकिंग. तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं. एंड इन विच बाय द yarns harness to make a opening for the filling yarn. So what it is the process, it is known as my shedding process. shedding process के अंदर क्या होता है, रेज होता है और लोअर किया जाता है. ठीक है, एक शेड बनाया जाता है.
हार्नेस का, सो दैट फिलिंग यार्न्स उसके अंदर फिल हो जाए। करेक्ट। Next, last question for today itself is cutting equipment used in the apparel industry. So, apparel industry में what kind of equipments, cutting equipments means the equipments need to cut is important. So, hand shear is my scissor. ठीक है, हैंड सीजर क्या होता है, shear क्या होता है, सीजर। बैंड नाइफ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कटिंग इक्विपमेंट। एल स्क्वायर क्या होता है, इज अ मेजरिंग वन। Straight knife is also used for cutting purpose. So my correct option is means I need to eliminate the third one. So this contain third option, I need to cut it. It also contain third option, I need to cut it. This also contain the third option, I need to cut it. So my correct option is answer number 3. ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको एलिमिनेशन मेथड के साथ अपने कोड्स को फुलफिल करना है। करेक्ट। सो यस, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू KMS फैशन। ऑल्सो ऑप्ट आर पेड क्लासेस। हम उन पेड क्लासेस को विद रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। रेगुलरली हमारे गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रेजेंट करते हैं। सो आपके टेस्ट भी रेगुलरली बेस पे होते रहेंगे फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स। यू कैन ऑप्ट आर दिस थिंग इंडिविजुअली, मीन्स अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए भी इसको लेना है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। करेक्ट। सो अभी हमारी इंटीरियर्स यूनिट चल रही है, फैब में हमारी जो स्टार्ट होगी दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑलरेडी वी कवर्ड आर 2 यूनिट्स। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।